Cricbits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome to another episode of Cricbits and Pieces. We are back after some gap because इंडिया का जो प्रदर्शन था सेमीफाइनल में हम लोग उस सदमे से उभर रहे थे और इसके लिए हम लोग को ब्रेक लेना पड़ा. बट वी आर बैक एंड वी हैव द रेगुलर पैनल. रोहित भाई वेलकम. लोरजित भाई. राहुल पराशर वेलकम. थैंक यू. सो आज जनरल हम लोग चिट चैट करेंगे. इंडियन क्रिकेट में कुछ चेंजेस आए हैं आफ्टर द सेमीफाइनल. हम लोग सिलेक्शन को लेके एपिसोड 1 से ही बात कर रहे थे कि सिलेक्शन थोड़ा और बेटर हो सकता था. कुछ नाम हैं जिसके बारे में सुनाई तक नहीं दे रहा है बट उन लोगों को कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होना चाहिए था. और पूरी सिलेक्शन कमेटी को एक साथ निकाल दिया है बीसीसीआई ने. और चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह, सुनील जोशी एंड देवाशीष मोहंती वर द 4 पैनल मेंबर्स, सिलेक्शन कमेटी पैनल मेंबर्स. एंड 5 का होता है ऐसे भी मेंबर. अभी गुरुविला का लास्ट ईयर एंड में टेनर खत्म हुआ था, सो अभी वो पोजीशन अभी भी खाली थी. तो पूरी नई सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी. तो उस सिलेक्शन कमेटी के सैकिंग और उसके इम्पैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे. उसके बाद द अदर थ्योरी दैट इज कमिंग अप अ लॉट ऑफ from a lot of places is about the multiple captains, right? Different captains for different formats. उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे कि क्या लगता है उससे कुछ फायदा होना है या नहीं होना है. और उसके अलावा बाकी और क्या हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, जो भी है हमारा फ्यूचर कैसा दिख रहा है. न्यूजीलैंड का सीरीज एक चल रहा है, बांग्लादेश वाला सीरीज एक आने वाला है. क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे कुछ इम्पैक्ट होना है उन सीरीज का. ओडीआई वर्ल्ड कप तो अपना सेटल्ड ही है. T20 मैचेस तो क्या ही करेंगे, बायलैटरल मास्टर कार्ड सब जीतते रहेंगे हम लोग. वो चलता रहेगा. तो यही कॉन्टेक्स्ट है आज के एपिसोड का. एंड विद दैट ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर एनीवन हु वांट्स टू टेक इट अवे. सिलेक्शन पे क्वेश्चन था, सिलेक्शन कमेटी पे भी क्वेश्चन हो गया. ये गजब है और होना ही था. अगर चेतन शर्मा लेड कमेटी की बात की जाए तो बहुत बार क्वेश्चंस उठ रहे थे इनके डिसीजंस पे. कई बार ऐसा लग रहा था जैसे मतलब टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी वाज नॉट ऑन द सेम पेज. बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देने जा रहा हूं, बस एक ही दूंगा कि बुमराह वाले केस में चेतन शर्मा सेड कि दिस हैपेंस व्हेन वी रश मैनेजमेंट को अभी नहीं खिलाना था, आपने उसको ले आया और ही इंजर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो, मतलब जो दूसरी पॉइंट आपने उठाई, स्प्लिट कैप्टेंसी, उस वक्त भी चेतन शर्मा लेड कमिटी, of course Saurav Ganguly was the BCCI chairman and Virat Kohli was the captain, and of course वहां पर भी लगा कि there was no coordination as far as the team and the management and the selection committee including BCCI. मतलब बिल्कुल दिख रहा था कि कहीं ना कहीं गैप तो है. and I cannot say, but लगता है जैसे चेतन शर्मा was not very good at communicating his viewpoint. वो clearly दिख रहा था. He would not be very comfortable in press conferences earlier also. And now the only thing is that I feel is कि भाई we need to have a very strong selection committee, because मतलब जितना मेरे को recall हो रहा है, I think only Mohinder Amarnath had resigned earlier from selection committee with regards to differences. Otherwise selection committees usually कभी इस तरीके से तो निकाली कभी नहीं गई है, ये तो मैं श्योर हूं. और कभी कंट्रोवर्सीज नहीं हुए हैं ज्यादा इस तरह के. लेकिन नेक्स्ट दिस विल बी अ बिग क्वेश्चन कि कौन बन सकता है. बिकॉज अगर हम अपने यूजुअल जो ग्रेट्स हैं रिसेंट पास्ट के, दे ऑल आर आइदर इन्वॉल्व्ड इन बीसीसीआई और दे आर डूइंग समथिंग which is much more lucrative than what they will get in selection committees. So it would be really interesting to see what happens there. And again, we will also like to see कि भाई split captaincy, because एक last point पे मैं पीपी भाई को सौंपना चाहूंगा that विराट कोहली was मतलब removed from captaincy because he wanted कि भाई मैं एक करूंगा, I will not do T20, and it was said कि नहीं आपको करना है तो ODI and T20 करिए. And now what we are hearing is that maybe Hardik Pandya will be made the captain of T20 team and ODI and Test will remain under Rohit Sharma. So I think it would not be unfair to ask why such a treatment was meted to
Kohli. These are certain things that come to my mind right now. PBY, please. Yeah, for sure. I think it's a very pertinent question, right? कि मतलब विराट कोहली ने क्या पाप किया था भाई? I know ICC tournaments हमने नहीं जीता है, but वो तो यार 8-9 साल हो गए नहीं जीते हुए. At least टेस्ट लेवल में एंड टेस्ट चैंपियनशिप में we played well. फाइनल में न्यूजीलैंड जैसी टीम से हारने में कोई देश में मतलब ऐसा खराब बात नहीं है. Like we reached that stage, we played good cricket and then we lost. So 100% क्या पाप किया था भाई कोहली ने? कंटिन्यू कर लेते उसके साथ. Coming to the point around selection committee, I'm recently been interacting with some of my old teammates and my coaches. And I won't go into the specifics of it because, well, what I'm about to say next is a little controversial, so I don't want to take any names. But one of my earlier coaches I was talking to, he's currently a selector for one of the state Ranji teams. And the feedback that I got from him was कि आप face किसी को भी बना दो, behind the scenes, the only person who's pulling all the strings is Jaisha. He's the guy who owns all the authority within BCCI right now. So अगर सिलेक्शन कमेटी को आपने फायर किया है अच्छी बात है, आप नई कमेटी को हायर करना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है. But if let's say the results don't change come 2023 and 2024 ICC tournaments, then at some point that accountability will have to rest with him as well. And there is some friction internally within the state boards with the amount of clout that is being held by people with non-cricketing backgrounds. But obviously, there is a political angle to it. People can't say much, and I don't want to go again into the politics of it. That is not what this channel is about. But I think that is something that we'll have to also keep in mind as we think through, the role of the selectors. Who are the people involved in selecting those selectors, and at what point do we start holding them accountable? So that's a question for later. But for now, I agree. I think the selection committee had been given the long rope, especially Chetan Sharma, and they couldn't deliver the kind of results that we were looking for. So a change was in order. Now, could that change have been handled a little better? Like to not make it as controversial as it was, कि आप बिना उनको communicate किए हुए सीधा sack कर दो. But ठीक है, the optics aside, I think this change was in order. Most people would agree on it. Let's see what comes off, who becomes the next selector, and how does that translate into results in the coming couple of years as we go into new ICC tournaments. And again, bilateral series में हम अच्छा खेलें and खराब खेलें, it doesn't matter. I think we've seen enough cricket over the past decade to know that bilateral series में performance is not an indicator of how our team is going to perform in ICC tournaments. Yeah, true. Ajit? Yeah, so very valid and strong first round of points made. Of course, मेरे को लगता है सिलेक्शन को लेके if you remember both of you, जब से हम लोग देख रहे क्रिकेट, सबसे ज्यादा question marks started not just the squad but squad and playing 11 maybe. I think since the time the Kohli Shastri era began, right? A lot of times we saw कि साउथ अफ्रीका में कुछ सिलेक्शंस गलत हुए, इंग्लैंड वाले सीरीज में कुछ सिलेक्शंस गलत हुए, जहां सीरीज हमको जीतनी चाहिए. Those were test series. Kohli I think holds the record of varying playing 11 for the longest number of matches, right? कि हर मैच में एक नया 11 आ रहा था. Which also shows कि there was some thought जो जा रहा है टीम के सिलेक्शन में, right? वो उनको ये horses for courses वाला थ्योरी लगा रहे थे at one point of time. शास्त्री and कोहली they were doing that. फिर उसके बाद कोहली का पूरा फियास्को हुआ जो हुआ, right? कि हम गेंद के कलर के हिसाब से कप्तान रखेंगे, राइट? पहले ये था लॉजिक, और अभी अचानक हो गया कि नहीं, व्हाइट बॉल में 2 कप्तान हो सकते हैं, विच वाज नॉट एन ऑप्शन सम टाइम्स बैक. सौरव गांगुली आए, सौरव गांगुली का टेंडर खत्म हुआ बीसीसीआई में. ही वाज आल्सो वेरी अनसेरेमनियसली रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप. रीजंस गिवन वाज कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग उनका बिहेवियर था, राइट? देयर वाज न्यूज कि सिलेक्शन मीटिंग में बैठ जाते हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट होके, विच इज नॉट अलाउड and which should not be allowed of course, क्योंकि हर किसी का अपना रोल है और उस रोल के हिसाब से आपको काम करना है. तो ये चीजें काफी कुछ हो रही हैं पिछले 4-5 साल में ज्यादा. तो बीसीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग थ्रू टर्बुलेंस वाला फेज, राइट? ठीक है, तो ऐसा हो रहा है. इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स अभी तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट इट विल शो
on the way that the team is going to play cricket, right? अब अगर आपका सिलेक्शन कमेटी है, जैसे चेतन शर्मा के पास भी 2 साल बचे हुए थे शायद उनके टेन्योर के, 4 साल का टेन्योर होता है, 2 ही साल हुए थे, 2 साल और बचा हुआ था। जो लोग हुए उनमें से शायद धर्मेंद्र सिंह थे जिनका खत्म होने वाला था 4 साल, बट बाकी तीनों का बचा हुआ था जहां तक मुझे याद है। तो ये चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा, और उसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स। एक और चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग अपना व्यूज दें इस पे, कि क्या सिलेक्शन कमेटी को सैक करके उनको स्केपगोट बना के बाकी सब लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इन टर्म्स ऑफ की, आई मीन रोहित शर्मा, केएल राहुल, इन प्लेयर्स के बारे में हम पूरे टूर्नामेंट में बात करते हैं, टूर्नामेंट के बाद हमने बात करी है, परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं है। रविचंद्रन अश्विन का T20 करियर अगर नहीं खत्म हुआ, देन वी आर गोइंग बैक इन टाइम, इज ऑल दैट वी आर डूइंग। तो क्या ये वो टर्बुलेंस का फेज है जो शायद खत्म होगा, और स्टेबिलिटी जब एक बार को बीसीसीआई में आ जाएगी, लोग अनसिक्योर है बीसीसीआई के अंदर, राइट? पॉइंट दैट राहुल यू मेड, कि लोग अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ भेदभाव है कि यार नॉन क्रिकेटिंग लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रिकेटिंग डिसीजंस में। बोर्ड में इन्वॉल्व होना इज वन थिंग, बट डिसीजंस में इन्वॉल्व होना इज समथिंग दैट विल इम्पैक्ट टीम एंड इट्स परफॉर्मेंसेस। तो ये सब चीज को लेके क्या लग रहा है आपको? पहले तो कि क्या सिलेक्शन कमेटी स्केपगोट बनाई गई है, और क्या बीसीसीआई का टर्बुलेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है? I think I can go first on this, and रोहित भाई उसके बाद फिर हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। Look, this was, I think we beat this topic to death. That this was not the best squad that we could have put forward in the World Cup, which means that the accountability rests with the selection committee. यार आपने वो टीम सेलेक्ट करके दी, the coach and the captain worked with the best that they got. Now, did the coach and the captain have a say in that selection? Like, they probably know what the dynamics were, but I wouldn't buy into the scapegoat wala argument, because वहां पे lapses to हुई थी. But to your point, once the new panel comes in, I think more heads need to roll within the team. आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं कर सकते। ये जितने भी प्लेयर्स के हमने नाम ले लिए, अश्विन हो गए, अक्षर पटेल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सम अकाउंटेबिलिटी तो इनकी भी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है चलो अब आप लोग T20 नहीं खेलोगे, अब आप लोग मतलब इंटरनेशनल T20 नहीं खेलोगे, आप लोग आईपीएल खेलो। आईपीएल खेलने से अकाउंटेबिलिटी तो नहीं आएगी। अगर इनको T20 में क्रिकेट अपना करियर बनाना है तो इनको बोलो ना आप जाके डोमेस्टिक खेलो, आईपीएल नहीं, आप डोमेस्टिक में जाके खेलो ना, जाओ एक सीजन खेलो आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। और अगर आप नहीं खेल सकते हो तो फिर आप रिटायरमेंट लो, you have no place in the squad, right? So I think that second level of change will come once the new panel comes in, but again it will depend on who sits on that panel and how transparent that selection process will be. उनके जॉब डिस्क्रिप्शन हम देख रहे थे, जॉब डिस्क्रिप्शन, I don't know if you उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी पब्लिश हुआ है। Transparency was a word that was used. I would love to see what comes out of it. How do we bring in transparency in team selection? The another thing that I noted about that job description is कि 8 पॉइंटर में से 6 पॉइंट में बीसीसीआई लिखा हुआ था कि आपको बीसीसीआई के साथ, but yeah, Astute. Wasn't lost on me. तो लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट बॉडी है, हर कोई जानता है, लेकिन ठीक है, इंडिया करके हम लोग तो चेयर करते रहेंगे। रोहित भाई, मेरा एक चीज आपको पहले मेरा एक पॉइंट ये है कि स्केपगोट बनाया गया यानी ये 10-15 दिन में पता चल जाएगा या 1 महीने में पता चल जाएगा। अगर सिर्फ इनको टारगेट किया गया तो स्केपगोट बना रहे हैं। अगर यहां से शुरुआत हो रही है देन इट्स अ वेलकम थिंग कि भाई नहीं आपने यहां से शुरू किया और एक तरह से क्या कह रहे हैं कि हम बेहतरी के लिए जा रहे हैं एंड वी आर लुकिंग एट एवरी एस्पेक्ट। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, दैट्स वन पॉइंट। मैं आई विल ब्रिंग द डिस्कशन टू अनदर पॉइंट कि अब बनेगा कौन सिलेक्शन कमेटी में, आएगा कौन? नहीं उस पे, हाँ ठीक है, उस पे हम लोग एक बार देखा जाएगा, लेकिन और अभी नहीं लाए, इसको रुक जाए, थोड़ी देर रुक जाए क्या? हाँ थोड़ी देर और एक दो चीजें, ठीक है, उसको रोक देते हैं क्योंकि बड़ा मतलब हम मतलब जब बातचीत हम लोगों के बीच में हुई ना कि किसको बनाया जाएगा, तो हम वही खोले कि भाई भारत के लिए खेला कौन कौन है। तो हम देखे कि भाई कहीं ना कहीं से सारे बड़े लोग तो कुछ और कर रहे हैं जो कि मतलब सिलेक्शन कमेटी में आना नहीं चाहेंगे। नहीं, मेरा एक ही पॉइंट क्या है ना कि चेतन शर्मा हो गए, इससे पहले सबा करीम हो गए, या अभी सुनील जोशी थे। देखिए ऐसा नहीं है कि ये लोग 10, 15, 20 मैच सब लोग खेला है, 23 मैच।
रोजर बिन्नी अभी बीसीसीआई हेड हैं, ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप विनर हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट आई थिंक कि स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन कमिटी वी नीड टू हैव पीपल, क्योंकि अगर पिछले 10-15 साल का अगर याद करते हैं तो एक दिलीप वेंगसरकर एंड मोहिंदर अमरनाथ वे द टू रियली स्टॉलवर्ट्स, मतलब जिसको इंडियन क्रिकेट का कहा जाएगा टॉप 20 में मान लिया जाए, उस टाइप के लोग में ये दोनों थे सिलेक्शन कमिटी में. एंड मोहिंदर अमरनाथ had even resigned when it came to that there were interferences. जैसा आप बात कर रहे हैं कि there are people who are taking all the decisions from behind. See, I think this would never happen if there are people who will not tolerate it, and we have enough people with enough integrity who will not allow this thing to happen. As far as within BCCI, a lot of politics is going on, and ऐसा नहीं है कि आज का दौर है, मतलब पीपी भाई मेरा मानना है कि पहले भी राइट फ्रॉम डे वन बीसीसीआई प्लस पॉलिटिक्स एकदम हैंड इन हैंड चला है, मतलब कोई ना कोई रहा ही है जो चला रहे हैं. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, मतलब हो सकता है कि आज जय शाह का नाम आ रहा हो, कुछ दिन पहले तक शायद शरद पवार जी का नाम आता हो, थोड़ा पीछे चले जाएं तो 90s में माधवराव सिंधिया का नाम आता हो. तो पॉलिटिक्स और ये तो चलेगा, तो इसको अभी हम लोग हटा के ही चले, उसके लिए अलग चैनल बनाएंगे. ये चीज तो लगा रहेगा. तो दैट्स थिंग, मतलब कौन बनेगा इस पे फिर से आएंगे, और यही है फिर मेरा नहीं, I think selection committee में one of the things that needs to be kept in mind is कि पहले selector का रोल क्या होता है. It's not just picking those top 15 players. मतलब top 15 player अगर आपको पिक करने हैं तो उसके लिए तो आप एल्गोरिथम लगा दो ना. उसके लिए you don't even need humans. I think selector का असली रोल होता है spotting that talent, playing in the domestic circuit, playing at the under 19 level, being able to groom them, being able to connect with their coaches who are and working with the state team के coaches. To ensure कि वो जो players हैं उनको हम एक pipeline create करें. I think one of the job description का bullet points था creating a bench strength. आप bench strength कैसे create करोगे यार? आप bench strength तो ऐसे create करोगे ना कि आप जाके domestic matches में देख रहे हो, you're sitting in, following the players, talking to their coaches to see कि हाँ किसी player को हम कैसे injury free रख पाए, कैसे उसको groom करें कि अगले 3 साल में वो हमारे team में आ पाए. मतलब you need to have that 3 से 5 साल का एक pipeline, right? एंड वो 3 से 5 साल का पाइपलाइन आप ऐसे नहीं बना सकते कि एक सुपरस्टार. आई थिंक अगर कैंडिडेट का असली आइडियल प्रोफाइल अगर आपको चाहिए एक चीज सिलेक्टर का, तो उस प्रोफाइल में जो फिट बैठता है वो तो हमारे कोच है राहुल द्रविड़, जो कि पिछले 5 साल से अंडर 19 इंडिया वगैरह लेवल पे घिसवा रहे हैं. उनको पता है किस लेवल पे क्या. एंड आई डोंट नो, पिछले एपिसोड में आई डिड क्रिटिसाइज राहुल द्रविड़ क्वाइट अ लॉट. But then as I read more and more about it, I get this feeling that he didn't have a lot of say in who gets to play and who gets picked in the squad, right? So Rahul Dravid is probably the guy who fits that bill the best. क्योंकि उसको पता है जूनियर लेवल पे कौन परफॉर्म कर रहा है, किस प्लेयर का क्या स्ट्रेंथ है, and he's taken that effort to work with players at the ground level. So that to me is the ideal profile for a selector. नहीं तो यू आर राइट कि वो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए राहुल द्रविड़ अपने एनसीए वाले रोल और इंडिया ए के कोच के, इंडिया अंडर 19 के कोच के दौरान में काफी कुछ किया है. एंड ही हैज स्पोकन वेरी वेरी वोकली अबाउट इट, सेइंग कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग फ्यूचर चैंपियंस एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, राइट? कि ये पाइपलाइन बनेगा, बच्चे ग्रूम होंगे और ऊपर जाके इंडिया के लिए खेलते रहेंगे. तो उन चीजों पे बात हुई थी. बट सेलेक्टर्स, इवन द करंट सेलेक्टर्स, राइट, हु वर सैक्ड, चेतन शर्मा का स्टेटमेंट था कि मैं तो विजय हजारे मैचेस देखने आया हुआ था कि टीम सेलेक्ट करने के लिए. तो दीज पीपल वर ऑन ग्राउंड, राइट, जब ये न्यूज आया कि आपको निकाल दिया गया है वैसा. तो वो ये लोग करते हैं ऑफ कोर्स और सेलेक्टर्स. बट द प्रॉब्लम इज कि अच्छा, मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में ये इसलिए जाना चाह रहा था बिफोर वी गेट इनटू कि कौन बन सकता है सेलेक्टर. इफ यू रिमेंबर, सेलेक्टर्स हैव ऑलवेज बीन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैव बीन डिसलाइक्ड, राइट? क्योंकि इफ यू रिमेंबर, मोहिंदर अमरनाथ सिलेक्शन कमिटी से तो रिजाइन किया ही था. मोहिंदर अमरनाथ एक टाइम पे सिलेक्शन कमिटी को बंच ऑफ जोकर्स भी बोल के अपने ऊपर बैन वैन भी लगवाया था जब उसके पुराने अपने खेलने के दौरान पे जब उसको ड्रॉप कर दिया था किसी सीरीज से, तो ही सेड सिलेक्शन कमिटी इज बंच ऑफ जोकर्स और समथिंग लाइक दैट. ये सब भी किया हुआ मोहिंदर अमरनाथ. बट आई थिंक द ओनली सेलेक्टर्स, राइट, टू नेम्स which Rohit bhai took, right? Dilip Vengsarkar and who's the other guy? रोहित भाई, किसका नाम लिया आप? दिलीप वेंगसरकर और
मोहिंदर अमरनाथ का ही नाम लिया, मोहिंदर अमरनाथ, हाँ हाँ, तो ये 2 बड़े लोग आए थे. बट अदर देन दैट आई थिंक किरण मोरे डिड अ डिसेंट जॉब एज अ सेलेक्टर व्हेन ही वाज अराउंड, राइट. तो किरण मोरे के टाइम पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखी है रिसेंट टाइम्स में. उससे पहले हमेशा आई थिंक वेंगसरकर से पहले वेंगसरकर आया था, आफ्टर विच आई थिंक गांगुली मेड अ कमबैक एंड ऑल दैट हैपेंड, राइट. बिफोर दैट whoever was around was playing around, right, कि ग्रेग चैपल, राहुल द्रविड़ एंड दैट सिलेक्शन कमिटी. उस समय भी कंट्रोवर्सी चल रही थी. किरण मोरे के बाद आया एमएसके प्रसाद. एमएसके प्रसाद के टाइम पे एमएसके प्रसाद, कोहली और शास्त्री का तिगड़ी था. उस समय भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और बातें होती थी कि भाई सिलेक्शन सही नहीं हो रहा, आप स्क्वाड ही सही नहीं भेज रहे, स्क्वाड सही जा रहा है तो 11 में नहीं जा रहा. अश्विन बार बार बाहर बैठ रहा था. तो अश्विन का अपना प्राइम का 1-2 साल तो काफी खराब हुआ, 2-3 साल बल्कि काफी खराब हुआ. बाहर में उसको एक मैच भी नहीं खेलने को मिला एंड ऑल दैट थिंग. तो ये सारी चीजें होती रही है सिलेक्शन कमेटी के अराउंड. वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाके आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार सेमीफाइनल में जाके आ रहे हैं. हम लोग इससे पिछले वर्ल्ड कप में राउंड में बाहर हो गए थे, लीग स्टेज में बाहर हो गए थे, राइट. सो दिस वाज एन इंप्रूवमेंट इफ एनीथिंग, राइट. और आप सिलेक्शन कमेटी पे पॉइंट करना इसलिए आसान है क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि सिलेक्शन खराब हुआ. 15 गलत सेलेक्ट किए आपने, फिर 15 में से 11 भी गलत सेलेक्ट कर रहे हैं. बट 15 से 11 का काम तो कोच और कैप्टन ही कर रहे हैं ना. आपने राहुल को इतना लॉन्ग रोप दिया, आपने पंत को चांस ही नहीं दिया. आपके पास अय्यर था ना रिजर्व में, आप यूज कर सकते थे. आपने अय्यर को भेज दिया कि भाई तू जाके सैयद मुश्ताक खेल, राइट. राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की तरफ से सिलेक्शन को लेकर क्या स्टेटमेंट है? एक टाइम बस बुमराह का रिप्लेसमेंट शमी होगा, ये उन्होंने 1-2 दिन पहले बोल दिया था. इसके अलावा तो कभी कुछ नहीं बोला. ना उन्होंने बहुत ज्यादा अग्रीमेंट भी शो किया, ना उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी भी शो विद द स्क्वाड दैट दे गॉट, राइट. तो पता नहीं क्या चल रहा है सिलेक्शन कमेटी को लेकर, मेरा ये ऑब्जर्वेशन था. अब हम लोग कर सकते हैं रोहित भाई के फेवरेट टॉपिक पे बात, कि सेलेक्टर बनेगा तो बनेगा कौन. मेरी तरफ से जो पॉइंट है मैं बोल देना चाहता हूं पहले. अच्छा सेलेक्टर को मेहनत करने का आदत होना चाहिए, साथ में टैलेंट स्पॉट करने का नैक होना चाहिए, which is something that we know a lot of good captains, all the captains who we say were good captains had that tendency, right? Of course, Saurav Ganguly is one of them. He spotted a lot of talents. He built a team around those talents and brought them up. And he used to have a lot of say in the selection, right? As a captain, he used to back his players and had a lot of say. MS Dhoni is the most successful Indian captain, right? कोहली तो अभी खेल ही रहा है, तो सिलेक्शन कमेटी में जाना थोड़ा अर्ली हो जाएगा. MS Dhoni, Saurav Ganguly will treat this as a demotion. BCCI प्रेसिडेंट बनने के बाद सिलेक्शन कमेटी तो नहीं आएगा वो. राहुल द्रविड़ ऑलरेडी कोच है, लक्ष्मण ऑलरेडी कोच है. तो हमारा जो फेमस 5-6 था, वो लोग सब तो अभी बिजी है कहीं और बड़े बड़े असाइनमेंट पे. और जो क्राइटेरिया है रोहित भाई, क्राइटेरिया एक बार आप बता दीजिए सिलेक्शन कमेटी का. वो 5 टेस्ट मैच, 8 टेस्ट मैच, 30 मतलब फर्स्ट क्लास कुछ 20. वैसा है कि 10 टेस्ट मैच या 20 फर्स्ट क्लासेस, और नहीं तो 21 डेज और 30 फर्स्ट क्लासेस, समथिंग इस तरीके से है. कुछ भी आपको क्राइटेरिया को पूरा करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है कि आप फर्स्ट क्लासेस के हिसाब से आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं. पूरा कर लेते हैं. जैसे एमएसके प्रसाद का नाम लिया गया, हार्डली हमको लगता है 5-6 वनडे, 5-6 टेस्ट मैच, इससे ज्यादा खेले नहीं थे. ठीक है, ऑफ कोर्स, मतलब ही वाज, मतलब सबसे लीस्ट. अब जैसे हरविंदर सिंह थे, इस बार हरविंदर सिंह हार्डली 1-1-2 टेस्ट मैच खेले होंगे, वही 10-20 वनडे खेल के ये लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया अदरवाइज फर्स्ट क्लास खेल के करते हैं. यहां पर पहला पॉइंट बताएंगे, पिछले 10 साल में 2 लोगों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिनको बहुत क्रेडिट क्रिकेटर्स कंटिन्यूसली देते हैं कि कहीं कोई फ्लॉ आ जाए उनके गेम में तो ये 2 लोगों के पास लोग जाते हैं. एक है प्रवीण आमरे, अपने टाइम का अच्छा क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी बनाना 92 में अगेंस्ट दैट क्वालिटी साउथ अफ्रीकन अटैक. ऑफ कोर्स, मतलब टेस्ट में तो फिर भी अच्छा हिसाब रिकॉर्ड भी था, 10 ही टेस्ट मैच खेले. और दूसरा नाम आता है अभिषेक नायर का. उसके पास भी लोग जाते हैं. ही वर्क्स अ लॉट. आई एम नॉट काउंटिंग देम एज पोटेंशियल सेलेक्टर्स, आई एम ओनली सेइंग कि द पीपल हु वर्क ऑन ग्राउंड, उनका नाम आ जाता है. अदरवाइज बड़े क्रिकेटर्स का तो बस ये है कि कोई एक एडवाइस दे दिया, समथिंग लाइक दैट, नथिंग मोर देन दैट. रही बात कौन बन सकता है, एक जो क्राइटेरिया है कि लास्ट मैच आप मिनिमम 5 साल पहले. तो
मिनिमम 50-60 क्रिकेटर तो इसी से निकल जाते हैं कि ये क्राइटेरिया ही उनका फुलफिल नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था उसपे सिलेक्शन कमिटी के चेयर मतलब जो नाम आ रहे हैं उसमें एक नाम आ रहा है लक्ष्मण शिवराम कृष्णन का। That is one first name. I know. Don't make faces, man. Again, I'm only telling you what I have read. Lakshman Shivram Krishnan, आप लोग मतलब, of course, at one point of time seen as a next big thing from our cricket, and फिर हाइट बढ़ गई, हाइट के बाद सारा बॉल एक गलत जगह टप्पा खाने की जगह पे फुल टॉस बनने लगा, and all that is there. But if you see, has continuously been the representative of Indian cricketers committees में रहा है, and has been commentator and all that. That is one that has come. Another name that has come is Nayan Mungia. The name of Nayan Mungia is there because Lakshman Shivram Krishnan will be from south. Nayan Mungia will be from the western zone. ये एक दूसरा नाम सुनने में आ रहा है। वैसे ही एक नाम जो बहुत दिन से कोशिश हो रही थी बट कभी नहीं आ पा रहे थे, दैट इज अजीत अगरकर। अजीत अगरकर का भी नाम थोड़ा बहुत आया है कि मे बी, बिकॉज वेस्टर्न जोन से 3 नाम अभी तक सुनने में आया है। एक है नयन मुंगिया, दूसरा है अजीत अगरकर और तीसरा है सलील अंकोला। सलील अंकोला इज लास्ट 3 साल से आई थिंक बॉम्बे में चीफ सेलेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। दिस टाइम दे वन द मुश्ताक अली ट्रॉफी ऑल्सो। उनके मतलब हिज सिलेक्शन कमिटी हैज डन दैट थिंग। तो फ्रॉम दी ये 3 लोगों का नाम मतलब वेस्ट से आ रहा है। वेस्ट से एक और नाम समीर दीघे का भी नाम आया है कि कहीं वो हो जाए। ईस्ट हमेशा से वैसे ही है। ईस्ट में आपके पास जितने क्रिकेटर थे लगता है सब बन चुके होंगे अभी तक। मतलब ईस्ट का अगेन वी ऑल कम फ्रॉम द सेम जोन, यू नो। आप देख लीजिए उठा के, सबा करीम बन चुके हैं इस बार, मोहंती साहब बन ही चुके थे, संजय राहुल आई थिंक उड़ीसा की तरफ से 3 वनडे खेले थे शायद, ही वाज आल्सो कभी। सो सौरव गांगुली विल नॉट लाइक टू टेक दिस डिमोशन। So I don't have anybody else from this because Riddhiman Saha and all have recently अभी तक खेल रहे हैं या खेल रहे हैं। दीपदास गुप्ता भी रह चुका है शायद। दीपदास गुप्ता also has been there in the selection committee. So ईस्ट का मुझे एकदम आइडिया नहीं है। ईस्ट वुड बी अ डार्क हॉर्स, कोई भी हो सकता है, वो कौन होगा कोई आइडिया नहीं। रणदेव बोस का नाम आ जाए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो वैसा कोई हो जाए तो अलग बात है। My only point again is that none of these names give that sort of confidence, maybe barring Ajit Agarkar or Salil Onkola who is proving himself. ईस्ट से रोहन गावस्कर को भी ला सकते हैं लोग, maybe हाँ, because first class वाले से तो आ ही जाते हैं। बंगाल से he has played cricket and a lot. And because one thing right about sorry रोहित भाई कट रहे हैं बीच में, ये जो आप नाम सब बोल रहे हैं ना उसमें अजीत अगरकर एंड रोहन गावस्कर, राइट, these people are very close to actions that happen in domestic circuit as well as under 19 and A level, क्योंकि जब भी इनका टेलीकास्ट देखो ना, these are the people who are a part of the commentary group and all those things, right? तो रोहन गावस्कर कम से कम देख रहा होता है प्लेयर्स को खेलते हुए, सेम विद अजीत अगरकर, वो लोग देख रहे हैं प्लेयर्स को खेलते। बट इन दोनों से भी सबसे अच्छा आदमी जो 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 हर लेवल का डोमेस्टिक क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट फॉलो करता है इन दी वर्ल्ड इज आई थिंक इज इयान बिशप। इयान बिशप से अच्छा कोई नहीं जानता है किसी भी देश के यंग प्लेयर्स के बारे में। इयान बिशप से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। जानते हैं यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा अपना जो एनालिसिस किए कि जैसे आप पहले बोले ना कि हमारा जो बेस्ट 5 था 2010 का, द्रविड़ इन्वॉल्व है, लक्ष्मण इन्वॉल्व है, तेंदुलकर नहीं बनना चाहेगा, गांगुली डिमोशन नहीं लेना चाहेगा, सहवाग may not have that sort of की selection and all. One person whom I really wanted that he should get into this setup was Ashish Nehra. Nehra shows a lot of brilliance. Nehra shows acumen. Again, I'm not saying that he was a great cricketer, had his share of injuries, but later he reinvented him. And specifically in T20s, he knew what he was doing. When he became the coach for Gujarat also last time, he did wonders. So potentially, I was looking into all the cricketers. One name I thought which could have been
tried and which who could have been persuaded. Of course, आप selection committee में कितना देते होंगे? 40 lakh, 50 lakh. He would be earning much more than that. But then this is one thing, because Nehra has that potential कि अगर कल को हम split, this we go for coaching also. He's very good because he has played the cricket recently and all that. So one name I thought Nehra was very good, because again, second run mein Yuvraj Singh has not shown anything like that. Harbhajan has become a MP. Gautam Gambhir again being MPs. I don't think these people are in any way involved in this. One person whom I thought was very close to this whole was Nehra. And another, again, Mohammad Kaif has been working in the setup, knows the thing, has again not showing any brilliance, but it seems that he has a good mind. Bhi Kaptan tha under 19 and all. So these are certain names that I have heard, and these are two names that I would like to see, because they in dono ka stature, I'm not saying ki they both are Nehra of course is a World Cup winner 2011. But आप लोग अगर इसके अलावा कोई और नेम अगर आप लोग को लगता है, because Ajit Agarkar I've already talked about last 20 I think years. one name that I would throw into the mix would be Anil Kumble, if he's up for it. He's somebody who can build credibility, and he's somebody who would work very well with Rahul Dravid. But I don't think he will be coming into this. Yeah, that's the problem. But at this point of time, agar selection, apologize, there's a lot of background noise from me. I don't know if you can hear it. No. So I think what the selection committee is suffering from is a lack of credibility. And जो बात हुई पैसे की, I think आपको incentive फिर देना पड़ेगा. If you need good people to come in, then you'll have to elevate the role, align the incentive structure, pay them more. If you want people, senior people like Anil Kumble to be coming in, I think Anil Kumble would do a damn good job with this. For the 1 year that he was a coach, except for the slightly strained relationship that he had with Virat Kohli, I think he checked off all the boxes. And with Rahul Dravid as the coach, I think he would bring in the kind of relationship that is needed, which is currently strained from everything I'm hearing and reading. Chetan Sharma ke saath. I think that is the kind of dynamic and the credibility that he would be able to bring in. But plus one to the names that you mentioned, I think Nehra would be a super pick. Nehra ji has been, has reinvented himself in the last decade, post-retirement, I might add. One last thing. आप लोग एक चीज देखिए, साल भर से आपका 5वां सेलेक्टर गायब था. ठीक है, सिलेक्शन कमेटी को चुनने वाला है CAC, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी. उसके चेयरपर्सन मदन लाल भी रिटायर हो चुके हैं बहुत पहले, 70 साल हो गया था. तो उस CAC में अभी जो दोनों मेंबर्स हैं, एक है RP सिंह और दूसरी है सुलक्षणा नायक. Again, my point is, see, I have got nothing against RP Singh or Madam Sulakshana Nayak. RP Singh 2007 के T20 World Cup के hero है. Everything good said and done. But again, I think कि CAC or these selection committees, these require some heavyweights. I know heavyweights also could not resolve the dispute between Kohli and Anil Kumble. I know that happens but then again, to the credit of Kumble, he faced everything with a lot of dignity. Anybody else in this case would have, अभी तक अपना 4 autobiography लाकर 4 बार एक ही कहानी सुना देता. But Anil Kumble, hats off to that man. Always, हम लोग जानते हैं that man is worth unlimited gold. 90s or 2000 वाले लोग जानते हैं, he was our savior. So again, always biased towards him, and of course Kohli may have his own reasons, not getting into that. Mera point again hai, we need to think ki why do we go with only this ki 10 one day, 10 test match, 20 first class. Are 20 first class to agar raha na, to bahut jaldi, nothing against the northeastern cricketers, but we know कि जितने आपके मैचेस हो रहे हैं रणजी में, दूसरे से तीसरे सीजन में 20 पूर जाएगा. And maybe after 5 years पता चला they all are eligible, because you cannot have this sort of parameters to select your selection committee. I think we need to make it much more stringent. First class has its relevance, I'm not denying that, but then first class should be, let's say, 80 first class or 90 first classes. And again, test matches minimum 25 to 30, one days, let's say, go for 50. And of course, one more thing, they should have played in a recent era.
Chetan Sharma's last one day would be around 89-90. Sunil Joshi maybe 2002, 2003. Harvinder Singh the same thing. Devashish Mohanty 2000. मतलब सब लोग 20-20 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुके होंगे. So something मतलब 2010 तक वाले पे भी रहो ना, जिसको थोड़ा T20 का भी एक्सपोजर आ गया होगा, would have known. So these are certain things that has to be looked into, and why not for transparency? जब सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग्स कैन बी publicized and televised, why not इन लोगों का भी what is the future plan? आप strategy मत बताओ, but what are their ideas? That should be told to people. See, हम तीन नहीं, but we are as fans, we are stakeholders of the Indian cricket and for that matter world cricket. We would like to understand क्या है इन लोगों का, that vision for Indian team. Because going to semi-final today, I was reading Ashwin said that it is a good thing. He said कि हाँ fans disappointed है, we understand, but he said कि भाई हम improve कर रहे हैं. But 9 साल से अगर India has not won a major tournament, there is something wrong, and that has to be looked into. That has lot to of be things, lot of things are wrong. Really. So just to close out this particular topic, right? Big names that you mentioned. The only issue that I see is all of them have lucrative IPL coaching contracts, which they'll have to let go if they decide to become a national selector, which I don't see happening. Kaf, Nehra. I think Irfan Pathan is another name which can come into mix. Irfan Pathan is also very close to a lot of action that happens on ground in domestic and junior level cricket. बट पता नहीं कौन सोच रहा है इनके बारे में, कहाँ से आएगा. सीएससी में ही कोई नहीं है तो भगवान ही जाने कौन लाएगा. तो ये है सिलेक्शन कमेटी का हाल. बट majority of us thinks that this is a start of a revolution in Indian cricket, and not just a scapegoat that selection committee is being made of. But देखते हैं, we will know more about it, and we will talk more about it once something new breaks on this topic. The next one is of course the in continuation, right? कि selection committee की बात हो रही है, तो बात हो रही है कि भाई क्या split captaincy, right? Multi captaincy नहीं, split captaincy थ्योरी इंप्लीमेंट करेंगे हम. T20 में हार्दिक पांड्या को देखा जा रहा है, वनडे और टेस्ट के लिए अभी रोहित शर्मा को देखा जा रहा है. चांसेस आर कि रोहित शर्मा का करियर वनडे और टेस्ट में से किसी एक फॉर्मेट में ऑफकोर्स जल्दी खत्म होगा, तो वहां पर भी एक कप्तान चाहिए होगा हम लोग. तो क्या लगता है आपको रोहित भाई, स्प्लिट कैप्टनसी को लेके? इंडिया में नहीं हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम. वी हैव been averse to split captaincy. I remember the first time someone did that was England, when they made Adam Holyoke white ball का कैप्टन. वनडे और टेस्ट हुआ करता था उस समय. They made a separate team altogether, saying कि वनडे वाले लोग टेस्ट नहीं खेलेंगे, टेस्ट वाले लोग वनडे नहीं खेलेंगे. So ECB did that at I think late 90s था वो, somewhere there. शारजाह में टूर्नामेंट जीत के गए थे एडम होलियोक की टीम. एडम होलियोक की टीम, राइट. सो एडम होलियोक को उन्होंने बनाया था, पहली बार वही हुआ था. उसके बाद लॉट ऑफ टीम्स एक्सपेरिमेंटेड, अभी काफी टीम्स में है. तो क्या लगता है आपको स्प्लिट कैप्टनसी? हाउ गुड एन आइडिया इज इट? हाउ डू यू सी इट वर्किंग आउट इन इंडिया? अजित भाई, मतलब आपने होलियोक का नाम ले लिया, मतलब पहला बात तो आपने मेरे मुंह से निकाल ही लिया है. मतलब सच बता रहा हूं, इंग्लैंड फॉर ऑल देयर मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को समझा. एंड इफ यू लुक, इंग्लैंड का सक्सेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2015 के वर्ल्ड कप के बाद. एंड वन ऑफ द प्लेसेस जहां पे उन्होंने समझा कि for test and the other formats, they may need 2 captains, Owen Morgan and Joe Root, of course, for test and T20s, ODIs. Now, Owen Morgan ke jagah pe we see Butler. And looking at England, clearly we can see that they have been successful. Let me go back slightly before them. Australia, they did the same experiment with Steve Waugh and Mark Taylor. Steve Waugh will win 99 World Cup. Mark Taylor was undisputedly the best captain in test matches. Later, they did this with Steve Waugh and Ricky Ponting. Ricky Ponting will go on to win the World Cups. And of course, Steve Waugh was there in the test matches. As recently, last time up T20 World Cup dekhi, I think Aaron Finch was their captain. When Australia was going ahead with Tim Payne and later other cricketers as their captain in test matches. Forget about these. Even Sri Lanka, Dimuth Karunaratne is their
test match captain, and Shanaka is their T20 captain, and they won Asia Cup. What I'm trying to say is that it's not a bad idea with so much of cricket being played. Yeah, please, Ajit bhai. नहीं, तो उसमें एक ही मेरा ऐड था. आपने जितना एग्जांपल दिया रोहित भाई सक्सेस ऑफ द स्प्लिट कैप्टेंसी का, द कैप्टन ऑफ वन फॉर्मेट वाज नॉट प्लेइंग द अदर फॉर्मेट. Yes. वो इंडिया में होता हुआ दिख रहा है आपको. इफ वी मेक हार्दिक पांड्या द T20 कैप्टन, डू वी सी हार्दिक पांड्या नॉट प्लेइंग वनडे एंड टेस्ट? I think Hardik Pandya will not play a lot of test matches. Because Ajit bhai, आप हार्दिक पांड्या से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 20 ओवर्स का बॉलिंग ऑल द टाइम. आप हो सकता है, देखिए इंडिया में तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे टेस्ट मैचेस, क्योंकि आपके पास जडेजा अश्विन ये लोग कर दे रहे हैं काम, आपका स्पिनर चाहिए. फॉरेन में आप इंग्लैंड जाके एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक कि, आई विश कि उसकी बॉडी इज गुड एनफ एंड ही डज ऑल दैट, बट आई सी हार्दिक पांड्या शायद टेस्ट मैचेस बहुत जल्दी छोड़े, बिकॉज he has a very long career in T20 and ODIs, test matches, 2-4 kabhi kabar types. And to make this thing, Rohit Sharma, I don't see will be playing a lot of T20s. Because, again, nothing against Rohit Sharma. We want him to be, always said that when he makes runs, he makes impactful runs. But agar aap log dekhiye, in this World Cup, Rohit Sharma was bereft of ideas. He, at many times, it seemed कि भाई नहीं, पहले बोल दिया गया 4 ओवर इसका, 3 ओवर उसका, 2 ओवर इसका, ऐसे करा लो, कोई चेंज नहीं, कहीं कोई इनोवेशन नहीं. So I don't think कि, because see 2024 के T20 में I don't see Rahul, Rohit, Kohli as 1, 2, 3. There are changes over there. Maybe Kohli will be there. राहुल अगेन अगर रीइन्वेंट कर लें तो अलग चीज है, बिकॉज ही हैज एज स्लाइटली ऑन हिज साइड. एंड आई डोंट थिंक रोहित शर्मा, बिकॉज दिक्कत है 2 साल और है, बिकॉज 2023 का क्या है ना, वनडे का पहले आपका वर्ल्ड कप है इंडिया में. अगेन रोहित विल हैव अ लॉट ऑफ pressure to deliver at that point of time. If he is not able to deliver, invariably I think some steps would be taken. So I think this split captaincy is not a very bad idea, because आप देखो ना गेम भी कितना खेल रहे हैं with a lot of travel. Along with that IPL का 2-2.5 महीना जोड़ लीजिए, जो कि कोई नहीं छोड़ेगा. अगर किसी को भी रेस्ट चाहिए तो न्यूजीलैंड का T20 में रेस्ट मिलेगा, IPL में तो भाई सब लोग तैयार रहिए. So that will always happen. So I think not a bad idea. And Hardik Pandya has proved himself, because एक last point and then I'll hand it over. Whenever Rohit Sharma won the Mumbai Indians IPL for them, everybody knew Mumbai Indians had a international lineup in their team. Gujarat did not have that, and yet Hardik Pandya delivered it to them. मेरे को याद है जब गुजरात की टीम बन रही थी and they had their no wicket keeper, और बाद में इन्होंने मैथ्यू वेड को खरीदा, and then एक अफगानिस्तान वाले को लिया, गुरबाज और somebody. I was like कि भाई ये लोग क्या टीम बना रहे हैं, ये तो बेकार टीम बना रहे हैं. But hats off to Ashish Nehra and Hardik Pandya. So Hardik Pandya seems to be a good bet. Please, sorry, बहुत लंबा खींच दिया. I think a couple of things. Split captaincy, like on board, I think there are plenty of examples in the past, right? There are fundamentally two different formats. T20, if you want to build a team from the ground up, I think the captain, having a dedicated captain for that format is a starting point. But I think the bottom line there is you need to build a team from the ground up. And the analogy that I would give is a couple of examples. One, football ka denge, 2006 World Cup, Germany. Average age of the team was 22 or 23. They had one experienced player. Baki sare team ko inhone revamp kiya because that was the need of the hour. And the other example I would give is cricket ka 2007. 2007 में जो हमने T20 World Cup बनाया था, it was a team that was built from the ground up. इसके players आज भी खेल रहे हैं. I think that is the approach that we need to take. हमारा जो average age है ना टीम का, उसको घटाना होगा. जो क्राइटेरिया हमने बना रखा है टीम का, उसके लिए 2 क्राइटेरिया होनी चाहिए मेरे हिसाब से. पहला, फील्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. If you're not a good fielder, you don't deserve a side in the T20 international squad at least. दूसरा, आप एक चीज ढंग से करो, या तो बैटिंग ढंग से करो या बॉलिंग ढंग से करो. अगर आप 3-dimensional player हो, हार्दिक पांड्या टाइप,
वेल एंड गुड, लेकिन ये जो मांजरेकर ने टर्म यूज किया है ना, आई हेट टू से इट, ही इज राइट, ये बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर्स जो है ना, ये नहीं चाहिए अभी। आप एक चीज करो, ढंग से करो। सो आई थिंक वी नीड टू, कैप्टन आपको बनाना है हार्दिक पांड्या, आई थिंक इज अ गुड पिक, स्प्लिट कैप्टनसी मेक्स सेंस, बट अगर आप स्प्लिट कैप्टनसी करके रुक जाओगे ना, यू नॉट गोना सी द रिजल्ट्स। यू नीड टू बिल्ड अ टीम फ्रॉम द ग्राउंड अप, गेट सम यंग प्लेयर्स इन द टीम। हो सकता है आप 2024 हार जाओ, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप टीम ढंग से बनाओगे, थोड़ा अगले 5 साल का विजन रख के बनाओगे, तो हो सकता है अगला T20 वर्ल्ड कप में हम अच्छा परफॉर्म करें। अभी तो यार मतलब कुछ भी चल रहा है वाला हिसाब है। सो आई थिंक दैट इज वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक, कि we need to think long and hard about the team that we pick. It cannot be going back to the same, कि 6-7 लोग हैं लेट 30s मिड 30s में दौड़ नहीं पा रहे हैं। लाइक आप सेमीफाइनल तक पहुंचोगे, लेकिन क्रूशियल गेम्स you'll continue to lose. अर्जित भाई, हाँ, आपके लिए एक सवाल है। ये हमेशा लोग कहते हैं कि when people retire, the question should be why rather than why not. भाई सही है? So in that sense, don't you think our initial set of cricketers like Dravid, Ganguly, Tendulkar, they were visionary? That 2007 World Cup mein they understood कि भाई T20 they should not be playing. yeah. They played, of course, they played IPL. I'm not denying that. IPL में खेल रहे थे, but they understood कि भाई ये मतलब international वाले से निकल जाना चाहिए. And my point is that we won our only World Cup when there was no IPL. And after that, once the IPL has come, we have not been able to deliver. So my question to you is that we all know बाकी के सारे लोग हमारे साथ खेलते हैं, हम बाकी के सबके साथ नहीं खेल रहे हैं. So there is a lot of this thing going in, that should we play in outside leagues or not? What is the opinion of both of you on that? So रोहित भाई, Again- हाँ गोल पिकर तुम बोल। यार देखो, मेरा ओपिनियन, आई थिंक आई हैव वॉइस्ड इट अ फ्यू टाइम्स इन द पास्ट आल्सो, एपिसोड्स आल्सो, कि अगर हमारे प्लेयर्स बिग बैश लीग में खेल रहे होते ना, तो हमारा परफॉर्मेंस शायद हो सकता है ज्यादा अच्छा होता है। द्रविड़ ने भी ये पॉइंट मेक करा, क्यों नहीं खेल रहे हमारे लड़के। कारण ये है कि अगर हमारे लड़के खेलेंगे तो व्यूअरशिप जाएगा, एडवर्टाइजिंग जाएगा, एडवर्टाइजिंग जाएगा तो बोर्ड्स के पास पैसा जाएगा। बीसीसीआई को ये चाहिए नहीं, उनको जमता नहीं है, राइट? लॉजिकली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंप्रूव होगा क्वालिटी। पुजारा जाके काउंटी का स्टिंट करके आता है, तो उसके बाद साला ठोक के रन बनाता है। आई नो डिफरेंट फॉर्मेट, प्रिंसिपल इज द सेम, राइट? क्यों नहीं खेल रहे हमारे लड़के? इसलिए नहीं खेल रहे बिकॉज़ बीसीसीआई डजंट वांट देम। एंड व्हाई डू दे नॉट वांट देम? बिकॉज़ इट्स अ गेम ऑफ कैश, इट्स जस्ट प्योर इकोनॉमिक्स एट द एंड, राइट? So BCCI needs to think long and hard about what is good for the game. I don't think they have ever. I'm not going to put point fingers at the current administration. It's always been the case, right? कि मतलब टीम अच्छा करे नहीं करे वो बात की बात है। हमारे जैसे फैंस तो गेम देखेंगे ही देखेंगे, कितने भी गंदे से हार रहे हो, so उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, which is why I don't think this is going to change in the near future. But anyway, Ajay, what do you think? Correct. Agree with all that you said, Parashar. But on Pujara, I have a point to make. Pujara काउंटी खेल कर आया, और सैयद मुश्ताक में क्या खेला भाई। सैयद मुश्ताक में पेल के मारा है, 200 स्ट्राइक रेट पे भी खेला है वो, विच वाज वेरी गुड टू सी। वहां भी वनडे में भी, इंग्लैंड में भी वनडे वाले में भी अच्छा खेला। मजा आता है, मेरे को पुजारा अच्छा करता है तो बहुत मजा आता है। बट अगेन रोहित भाई, ऑफ कोर्स खेलेंगे तो उससे फायदा होगा क्रिकेटिंग टर्म्स में, लेकिन नुकसान होगा इकोनॉमिक टर्म्स में। और इट्स अ कर्स फॉर बीसीसीआई टू बी द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड, राइट? क्योंकि अब वो टैग लूज नहीं करना चाहेगा कोई, राइट? और वो टैग पकड़ेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं तो दबा के रखना पड़ेगा एक प्रॉपर्टी जहां पर सिर्फ आपके स्टार्स अवेलेबल है, राइट? आईपीएल विल बी डाइल्यूटेड अगर हमारे प्लेयर्स बाहर जाके खेलेंगे, राइट? एंड बीसीसीआई विल नॉट वांट दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, नॉट जस्ट फॉर द बोर्ड, फॉर प्लेयर्स एज वेल, राइट? तो प्लेयर के भी इंटरेस्ट में, अगर कल को आईपीएल में पैसा कम हो जाएगा तो प्लेयर्स रिटायर होके जाके खेलने लग जाएंगे बिग बैश लीग, जो बाकी के प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए करते, राइट? ये अपना, मेरे को नहीं चाहिए बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट, मैं खेलेगा सब लीग। तो ये बहुत ही पेचीदा है मामला, राइट? और इसका क्रिकेटिंग सब जवाब है हाँ, इकोनॉमिक जवाब है कि कभी नहीं होगा। नहीं तो यार उसमें मतलब फिर आई थिंक मिडिल ग्राउंड नीड्स टू बी फाउंड, राइट? आप ये थोड़ी बोल रहे हैं कि पूरे जो 15 का जो स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप में खेलने वाला, पूरे 15 जाके उससे पहले बिग बैश में खेल रहे हैं। और आप एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो।
बट पीपी वो 2-3 प्लेयर्स तो रिस्ट्रिक्शन, जाके खेल ही सकते हैं ना यार। बट आप पर्सनल लेवल पे जाके रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट से कि कोहली और शर्मा यार नहीं जाएंगे और बीसीसीआई हुडा कुछ भी जाएगा। कर सकता है, बीसीसीआई कुछ भी कर सकती है यार, ऐसा थोड़ी है। वो तो जो चाहे कर सकते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई प्लेयर्स कि हाँ ठीक है भैया, ये हमारे मेन स्टेज होने वाले हैं, वर्ल्ड कप अगला हमारा इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, वी नीड आवर टॉप 3 में से एक बैट्समैन और हमारे जो एक आधा बॉलर्स है, वी वांट देम टू गो एंड प्ले एंड गेट दैट एक्सपीरियंस। बीसीसीआई कैन ऑलवेज डू दैट। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विल। So see, if you see PP, England players do that with IPL, right? And the outcome of that is they're not getting sold anymore. So no one will want a player like that who pulls off at the later stage or close to the tournament. कुछ भी रीजन देके, जैसे राइट मिचेल स्टार्क आईपीएल खेलना छोड़ दिया अपना टेस्ट मैच बढ़ाने के लिए और वनडे बढ़ाने, उसके बाद मारा गया उसका बॉलिंग का, ठीक है, which may be just a happenstance or causation does not mean correlation does not mean causation, right? बट ये उसका इम्पैक्ट फिर ये होगा कि फिर लोग इंडियन प्लेयर्स को नहीं लेंगे, जैसे इंग्लैंड वालों के साथ हम करते हैं ना, आईपीएल में अब इंग्लैंड प्लेयर नहीं बिकते। तो यार कल को अगर केएल राहुल बोलेगा ना कि मेरे को खेलना, आई नो राहुल का नाम डिलिबरेटली डाला है, अगर कल को केएल राहुल बोलेगा ना कि मेरे को बिग बैश में खेलना है, आई कैन गारंटी यू टीम्स विल लाइन अप कि ठीक है लड़का हगेगा, सॉरी फॉर द प्रोफेनिटी, लेकिन जब मारेगा तो बहुत मारेगा, एंड इट वर्क्स आउट इन आवर फेवर आल्सो। And the point being कि यार मतलब at some point our board will have to start prioritizing our cricket over economics, because they need to see in the slightly middle to long run, economics will come if the team does well. I know Indian cricket में हमारे fans like we are fanatics. 96 में जब हम हारते थे, जाके शारजा में हारते थे, तभी भी मैच देखना छोड़ा थोड़ी ना हमने, अगर हारेंगे तब भी मैच बैठ के तो देखेंगे ही, लेकिन at some point the patience will start to run out. क्या चल रहा है यार, एंड देन वी रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग दोज जो यूएस वगैरह में जो नहीं होती, एनएफएल चल रही है, एनएचएल चल रही है, कि अपने पर्सनल लीग देख रहे हैं और ऑल स्टार टीम बना के हमने भेज दिया कि हाँ ठीक है लड़के वर्ल्ड कप खेल के आएंगे और वहां से हार के आएंगे। सो एट सम पॉइंट आई थिंक बीसीसीआई नीड्स टू डू व्हाट इज गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। इट्स अ स्पेशल थिंग। इस क्वेश्चन को फिर मतलब एक अलग एपिसोड में हम लोग डील करना चाहेंगे, because one aspect we did not touch here was about injuries also, because if we play more there will be chances thoda injury ka, but then aaj ke liye I think we have done a lot of discussion, and I know a lot of people have written to me ki bhai sir agla discussion kab aa raha hai, and for them I think this 1 hour long discussion would be more than enough for the day. Ajit bhai, please last final words from you. हाँ हाँ रोहित भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइटली सेड कि थोड़ा लंबा गैप हो गया था, बट ये अभी नहीं होगा, हम लोग भी कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसकी वजह से भी गैप हुआ था, बट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, वेरी नॉन क्रिकेटिंग टाइप ऑफ डिस्कशन, मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंगल टू इट, राइट, कि बीसीसीआई में क्या चल रहा है, सिलेक्शन कमेटी में कौन आएगा, स्प्लिट कैप्टेंसी के पीछे क्या जुगाड़ लगेगा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट दीज आर ऑल आवर व्यूज. The viewers, the listener, please share what you guys think कि क्या होगा सिलेक्शन कमेटी को लेके, स्प्लिट कैप्टेंसी पे आप क्या इम्पैक्ट देखते हो, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या कोई नया नाम है आपके दिमाग में जो आपको लगता है? मेरे को है पीपी की केएल राहुल भाई जाके बिग बैश ही खेल ले, छोड़ दे। ओके, जस्ट अजित भाई आपके सारे चीजों के लिए जो लोग सुन रहे हैं, दे शुड राइट देयर नेक्स्ट, उनका डिमांड क्या है वो कमेंट सेक्शन में। हाँ वो भी अच्छा तरीका है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, वर्ल्ड तो कप खत्म हो गया, आप टॉपिक भी बता सकते हो कि क्या आप टॉपिक क्या आप चाहते हो, बट क्रिकेटिंग ही रखना, क्रिकेट हाँ वो तो बाकी चीजों में हमारा हाथ थोड़ा तंग है लेकिन यस, सो दैट इज दैट. थैंक्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन रोहित भाई, राहुल पराशर एज यूजुअल. Thanks for tuning in and listening to us. Thank you. Bye-bye. Bye. Cricbits and Pieces, an unexpert panel.